Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 8th of August. The session will be quite interesting and important, so stay tuned with us till the end. Students, in this video we are talking about RBI's third bi-monthly monetary policy. Then we are talking about RBI that has issued the final co-lending norms to enhance the risk sharing and transparency. Then we are talking about IDFC First Bank. They have launched something for NRIs. We will be discussing about it, and an MOU that has been signed to boost the e-commerce export of the MSMEs in India. All these things and many more will be discussed here, so stay tuned with us till the end. If you are new here students, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs, and share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors, and let them know about this interesting platform. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Let's start with national affairs students. India and Russia, they have signed a pact to strengthen the industrial and technological ties, right? So India and Russia working group has been established, and this was during the 11th session where we will be working on enhancing the industrial and technological ties between these two countries. So take a note of this. Where was this 11th session on India Russian working group held? It was held in New Delhi. And from India, Amardeep Singh Bhatia, and from Russia, Alexei, they were there and they signed this MOU. This is basically, or this framework, or this India and Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation. Here also remember, if we talk about this protocol aims to strengthen what? It aims to strengthen collaboration in aluminium, fertilizers and railway sector also, while promoting the capacity building in technology transfer in the mining sector. Right, even we are seeing that USA has imposed a tariff of 25% earlier, and now an addition of 25% more has been imposed on India. And the reason that they are giving is that India is importing huge amount of oils from Russia and they are supporting them. That is the reason they are in USA is imposing 25% tariff. But still India is firm on their demand and firm on their stand, and now we are seeing again India and Russia, they have signed a pact to strengthen the industrial and technological ties. Next is FIEO. What is this? That is your Federation of Indian Export Organization. They have released the overview of states Expo 24-25, and Gujarat has topped with 9.38 lakh crores for exports in FY25. Right, so FIEO, they have released the states Expo 24-25 data released by FIEO. It comes under the Ministry of Commerce and Industry, and the top exporter here was Gujarat state. Right, Gujarat exported the most with 9.83 lakh crore amount. Right, then Maharashtra was on the second position and Tamil Nadu on the third position. Right, also remember, from Gujarat, Jamnagar was the highest contributor of Gujarat with 36.91% of the total exports from Gujarat. Right, then if we see the data, first Gujarat, second Maharashtra, third Tamil Nadu and fourth is Karnataka. Next is Ministry of Statistics and Program Implementation has proposed new base year for the GDP, IIP and CPI. What is GDP? Gross Domestic Product. What is IIP? Index of Industrial Production, and CPI? Consumer Price Index. Right. So Ministry of Statistics and Program Implementation, they have introduced a new base year, right, for these three things. Correct. Take a note of this. What is the new base year? It is 22-23. Correct. New base year, this is 22-23 for GDP and Index of Industrial Production. If we talk about for CPI, the new base year is 2024. Correct. And what is the main purpose for this? It is to capture structural changes in the economy. Next is Banking and Finance. We are talking about RBI's third bi-monthly monetary policy for FY26 here. Right, and this third bi-monthly monetary policy committee was this meeting of this
committee was held from 4 to 6th of August. It was held under the chairmanship of Shri Sanjay Malhotra, the governor of RBI. And here if we see some important changes, or the rates, repo rates has remained unchanged at 5.5%. This is important. There was a news in the market that there is a high chance of being repo rate reduced, but the repo rate has remained same. Right, reverse repo rate at 3.35, standing deposit facility 5.25, marginal standing facility at 5.75, then cash reserve ratio, that is CRR, at 3%, then statutory liquidity ratio SLR at 18%, and bank rate at 5.75%. Correct, take a note of it. One more thing, remember here, the GDP that is expected for 5.6% FY26 is 6.5%, and inflation at 3.1% for FY26. But students, remember one more thing, because of AI job losses, because of the tariffs, right, we can see rise in inflation. One more thing, if USA is imposing so many tariffs, then their citizens, they will have to feel the heat, and the inflation in USA will be rising as they are imposing the tariffs here. So the end product for the consumer in USA will become costly, and they have to bear the price, hence increase in inflation. Also, we saw that in treasury bills, SIB has been allowed in the retail direct platform. We discussed this yesterday. Next students, we are talking about is RBI has issued the final co-lending norms to enhance the risk sharing and enhancing the transparency, right? So RBI issued various revised co-lending guidelines for banks and NBFCs under various provisions of Banking Regulation Act and National Housing Bank. As per these guidelines, it is now mandatory for all the regulated entities involved in the co-lending agreements to retain a minimum of 10% of each individual loan on their own books. Right? These revised guidelines, they will come into force from 1st of January 2026. The new rules mandated the loan originator to transfer the loan to the co-lender within the 15 days of the loan being originated. Correct? Take a note of it. Important, students. So what we are talking about, launch of final co-lending guidelines for banks and NBFCs launched by RBI effective from 1st of January 2026. Minimum rate of individual loan 10%, applicable to commercial banks, right? And deadline here is 15 days, and maximum DLG is of 5%. What is DLG? Default loss guarantee. Correct? Next is IDFC First Bank, students. They have launched the Remit First to India for NRIs to transfer money to India. I repeat, IDFC First Bank, they have launched Remit First to India, that is a modern digital remittance platform in partnership with SingX, a leading remittance provider licensed by Monetary Authority of Singapore for NRIs to send money to their families in India with seamless cross-border payment experience. Correct? So what we are talking about? We are talking about Remit First to India, a digital remittance platform so that the Indians abroad can send money back to India. For whom? It is for NRIs, launched by IDFC First Bank, and to send money to India quickly, securely, and without any transfer fees. Next is economy and business. Amazon India and FIEO, they have signed an MOU to boost the e-commerce exports of the MSMEs in India. See, students, again I am discussing this, that India is heavily betting on the MSME sector. We want to grow this sector because this is a sector that is creating a huge number of job opportunities, providing employment to the youth of India. Also, these MSMEs, they develop various services and products. These products and services, they are then exported into the international market, so that fetch good dollars for us. So that is the reason we want to promote these sector, that is MSME sector. And for this, Amazon India and FIEO, they have signed this MOU to boost the e-commerce export of the MSME sector. Focus sector in this MSME will be handicrafts, home textiles, apparels, toys. Next, Goldman Sachs has revised the India's GDP forecast for 2025 and 2026 amid the USA tariff impact. I repeat, Goldman Sachs Incorporation, they have revised the economic outlook for GDP of India. They are projecting for calendar year 25 to be 6.5%, and for calendar year 26 they are projecting 6.4%. Here you can see it. Right, and due to 25% tariff imposed on by USA on Indian goods, another 25% has recently been announced by Donald Trump.
Then current account deficit, it has raised to 0.9% of the GDP for the same years. Next is awards and recognition. Fortune 100 most powerful people in business list has been released and Jensen Huang has topped it, whereas Mukesh Ambani was ranked at the 56th position. So take a note of it. Fortune, that is an American global business magazine, they have released their second edition of the Fortune 100 most powerful people in the business list, and Jensen Huang, the CEO of Nvidia, an American technology company that has recently become the first company to cross the $4 trillion mark. After that, Microsoft has also achieved it, but first was Nvidia, right? They have secured the top position here. Then here, Mukesh Ambani from India, the chairman and managing director of Reliance Industries Limited, secured the 56th position in this list. Correct. So here you can see this is the second edition by Fortune. First Jensen Huang, then Mukesh Ambani on 56th position, and these are other Indian origins that were in this list. And one Indian woman was there in this list, that is Dr. Reshma Kevalramani, the CEO of Vertex Pharmaceuticals, ranked 62nd on this list, making her the first appearance on the ranking. Next is Indian Army inducted the BEML Semi-Automatic Minefield Marker MMME Mark II. Right? So it is Bharat Earth Movers Limited. Correct? They have developed a cutting-edge semi-automatic minefield marker indigenously built by BEML. Right? That is MMME Mark II. Right? Take a note of this. That is Mechanical Minefield Marking Equipment Mark II. This marked a significant milestone towards defense indigenization and operational preparedness. Correct. Here you can see some features of it. Operational speed at 1.2 km per hour. And the purpose here is to semi-automatically mark and fence the minefields. Next is environment. Discovery of narrow-banded rain snake has been discovered in Mizoram, and Smithopus leftofascicatus. This is the name of this new narrow-banded rain snake that has been discovered in Mizoram. Next, MS Swaminathan's biography, The Man Who Fed India, has released to commemorate on his 100th birth anniversary. I repeat, MS Swaminathan, also known as the father of Dash, or we can say, not giving you the homework, father of Green Revolution, right? His biography has been recently released, that is The Man Who Fed India, and it will be released on his 100th birth anniversary, right, which is celebrated on 7th of August. That is, it was celebrated yesterday, that is on 7th of August. Correct. Take a note of this. Green Revolution, he brought a revolution in the wheat sector, right, which was very important for India. Correct. And he is known as the father of Green Revolution. Then next is, students, National Handloom Day observed on 7th of August. It is basically to honor the handloom weaving community engaged in the handloom sector and highlight the handloom industry's contribution to India's socio-economic development. 7th of August, it marks the 11th National Handloom Day in India, and in 2015 we observed the first National Handloom Day that was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. Correct. So we are talking about the 11th edition this time on 7th of August 2025 with the theme My Handloom, My Pride, My Product, My Pride. Next is state news, students. Kerala has launched heat resilient Mudadi, right? It is a project to tackle the extreme heat in Kerala. So Mudadi, this is the name of the project, that is heat resilient Mudadi, and it has been launched to mitigate rising temperature due to extreme heat waves, and Kerala's first comprehensive heat action plan by a local self-government body aiming at regulating the local temperatures and reducing the impact of climate change. So that's all for the day, students. Now let's move to the revision part. It will be quite beneficial for your learning, and then we'll proceed to the homework section. Every year, when is World Bicycle Day observed across the globe? So World Bicycle Day is observed on 3rd of June every year in order to promote the usage of bicycles. First time this day was observed on 3rd June 2018. Next, every year, when is International Day of Innocent Children Victims of Aggression observed across the globe to raise awareness about their rights and also to safeguard their rights. So this day is observed on 4th of June every year. And this year it was the 43rd observance of this day. Next, which organization observes the International Day for Fight Against Illegal, Unreported and Unregulated Fishing annually across the globe on 5th of
June to promote awareness about the threats posed by IUU fishing activities that undermine the sustainable fisheries. So, which organization it is that we are talking about? Food and Agriculture Organization, the arm of UN. And this year it was the 8th edition of International Day for Fight Against IUU Fishing. First time this day was observed in 2018. Next, the Russian Language Day is annually observed across the globe on 6th of June to promote awareness of the Russian language's cultural richness and their role as a symbol of national identity and literary heritage. This June 2026 marks whose 226th birth anniversary, also regarded as the father of modern Russian literature. So every year world or this Russian Language Day, we observe this on 6th of June. Now the question asked is that this 6th of June, it marks the birth anniversary of a very famous modern Russian literature, who also known as the father of the modern Russian literature, right? Whose anniversary is this on this day? It is the anniversary of Alexander Sergeyevich Pushkin, right? And this is in this 2025, it is 226th birth anniversary of him, also known as the father of modern Russian literature. Next, every year, when is World Pest Day observed across the globe to raise awareness about the critical role of professional pest management. So, 6th of June, we observe World Pest Management Day. Next, every year, when is World Food Safety Day observed across the globe? So, World Food Safety Day is observed on 7th of June, and this day is observed by United Nations Armed Food and Agriculture Organization and World Health Organization. There is a theme, students, that you need to all remember: food safety, science in action. Food safety, science in action is the theme here. Next, World Brain Tumor Day. When do we observe this day? World Brain Tumor Day is observed on 8th of June every year, and there is a theme being brain health for all ages. And ribbon gray ribbon is the official symbol here. Next, World Accreditation Day is observed annually on 9th of June to promote the significance of accreditation, a formal independent verification that a program or institution meets set the quality standards. So, World Accreditation Day observed on 9th of June. Question asked is, along with International Accreditation Forum, WAD was launched by which organization in 2007? It is International Laboratory Accreditation Corporation, right? And it was launched in 2007. Next, International Archives Day. It is observed globally on 9th of June to highlight the significance of records and archives in safeguarding the rights, identity and heritage of individuals and societies. Question is, the day also commemorates the establishment of International Council on Archives on 9th of June in which year? In 1948 in Paris, France. Right? Take a note of this. And International Archives Weeks is also observed from 9 to 13th of June. Next is, every year, when is International Level Crossing Awareness Day observed globally to highlight the risk associated with the level crossings, the points where roads and railway tracks intersect at the same level, and to encourage the safe behavior. So, International Level Crossing Awareness Day, when do we observe this? It is observed on 5th of June. And this year, it was the 17th edition of this day that was observed with the theme helping people make good decisions. Next, every year, when is International Day of Play observed worldwide, highlighting the importance of preserving and promoting and prioritizing the play as a vital component of human development with a special focus on children. So, International Day of Play, when do we observe this? 11th of June. And this year, it was the second observance of this day with the theme choose play every day. Next, every year, when is International Albinism Awareness Day observed globally to raise awareness about albinism, a rare, non-contagious, inherited genetic condition present at birth, and advocating for the human rights of the persons with albinism worldwide. So, when do we observe this International Albinism Awareness Day? It is 13th of June.
Next, and this year it was the 11th observance, 11th edition that we observed for this day. Next, World Blood Donor Day, observed on 14th of June worldwide. World Blood Donor Day was first observed in 2004 to mark the birth anniversary of whom on 14th of June. So, Carl Lensteer, right, on his birth anniversary, and this year it was the 21st anniversary of World Blood Donor Day, and it is observed on the birth anniversary of Carl Lenstein, right? Next, World Elder Abuse Awareness Day is annually observed across the globe on 15th of June to raise awareness about the abuse, neglect, and mistreatment faced by older persons. In collaboration with which organization? International Network for the Prevention of Elder Abuse initiated the observance of WEAAD in 2006. So, which organization we are talking about here? It is World Health Organization, WHO. Next is every year Asian Dengue Day, observed globally as a regional advocacy initiative to raise awareness and strengthen the efforts against dengue, emphasizing preventive measures and scientific advancements to combat this deadly disease. It is, when do we observe this Asian Dengue Day? It is 15th of June, Asian Dengue Day. One more, remember students, Global Wind Day. Global Wind Day. When do we observe this Global Wind Day? On 15th of June. And theme being Day of Community Action. Next, World Day to Combat Desertification and Drought, observed on 17th of June. Identify the year when UNCCD was officially established. So you have to find the year. What is the year we are talking about? It is 1994, right? Apart from this, tell me recently, when do we observe the United Nations International Day of Family Remittance? It is observed on 16th of June, and theme for this day is remittance financing development. Next is on which date is International Day for Countering Hate Speech, observed every year across the globe to combat raising spread of discriminatory rhetoric and foster intercultural dialogue and tolerance? It is, when do we observe this day? It is 18th of June we observe this day. And first time this day was observed in the year 2022. Next, World Autistic Pride Day, observed on 18th of June around the world to promote self-advocacy, acceptance and neurodiversity among the individuals with autism spectrum disorder. What is the theme of the World Autistic Pride Day? So theme is being asked to you about the World Autistic Pride Day. Theme being unapologetically autistic, right? Next, every year, when is International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict, observed globally to raise awareness about the need to end conflict-related sexual violence and to honor the victims and survivors of each such violence. So every year we observe this day on 18th of every year we observe this day on 19th of June, right? And this year it was the 11th observance of this day that we observed. First time we observed this day in 2016. Next, National Reading Day is observed across India on 19th of June every year with an aim to instill reading culture among all the age groups and encourage the literary through books and libraries. The day is observed to commemorate the contributions of which personality widely known as the father of library and literary movement in Kerala. So, National Reading Day we saw observed on 19th of June, and on whose birth anniversary or the person known as the father of the library and literary movement in Kerala, who is he? P.N. Panikkar. Correct? Take a note of it. And this year it was the 13th edition of the National Reading Day that we observed. Next, World Hydrography Day, observed on 21st of June, and this day to recognize the crucial role of hydrography in maritime navigation, environmental protection and sustainable development of marine resources. This World Hydrography Day, annually observed on 21st of June to commemorate the establishment of International Hydrography Organization in which year? So the year is being asked to you, it is in 1921. And what is the theme here? Seabed mapping enabling ocean action. First time this day was observed in 2000
2026. Next, every year when is World Music Day? Observed to promote unity, creativity and emotional connection through musical performances across public spaces worldwide. So, when do we observe this World Music Day? On 21st of June. Next, and one more thing, remember this year it was the 43rd anniversary of this day. Next, every year when is International Widows Day observed to amplify the voices of widows, highlighting the systematic discrimination, economic hardships and human rights violations faced by widows globally, particularly in developing nations. So every year when is International Widows Day observed? It is observed on 23rd of June, right? And first time it was observed in 2011. Next, International Day of Women in Diplomacy observed to recognize and promote the participation of women in diplomatic roles, including peace building, negotiation, and multilateral democracy. So, every year, International Day of Women in Diplomacy is observed when? It is observed on 24th of June, right? And this year, it was the third observance of this day. Next, when is World Vitiligo Day observed to raise global awareness about vitiligo, an autoimmune disorder causing loss of skin pigment and lighter patches. So, World Vitiligo Day observed on 25th of June, right? Take a note of it. And this World Vitiligo Day, also known as Vitiligo Awareness Day, Vitiligo Purple Fund Day, right? And purple color is the official color here for representing vitiligo awareness. Next, every year when is World Refrigeration Day celebrated across the globe? So World Refrigeration Day is celebrated across the globe on which date? It is celebrated on 26th of June. Then apart from this, if we see, when do we observe? Tell me. International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, 26th of June. Right? Then apart from this, tell me Samvidhan Hatya Divas. This is important. Samvidhan Hatya Divas. Right? That is your Constitution Murder Day. When do we observe this day? It is observed on 25th of June. Reason being, on this day in 1975, then Prime Minister Indira Gandhi invoked emergency, and this emergency was imposed under Article 352, right? And it lasted almost 21 months. Next is our homework question, students. First question, tell me who became the fourth Indian women to earn the Grandmaster title. Then second question, tell me recently in the World University Games, what is the rank of India in the medal tally and how many medals did India win? Then third question, tell me recently, if I ask you bold Kurukshetra, this is an exercise held between which two countries, held where, location also, right? Fourth question, name that indigenous pollution control vessel launched by Goa Shipyard Limited and given to Indian Coast Guard. What is the name of it? And the fifth question, students, what is this Tracers mission? Tracers mission. Who launched this mission? I want the full form of this tracer also, right? And what this tracer mission will be doing. So these are your homework questions, students. I need to maximum participation from all the students watching this video. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 8 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो आपकी लर्निंग में काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई की थर्ड बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी की। देन हम बात करेंगे आरबीआई ने इशू किया फाइनल को लेंडिंग नॉर्म्स को जो एनहेंस करेगा रिस्क शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी को। देन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया रेमिट फर्स्ट टू इंडिया को, जो हम डिस्कस करेंगे, एनआरआईज के लिए लॉन्च किया गया है। देन एक एमओयू डिस्कस करेंगे जो कि इंडिया के ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगा ऑफ एमएसएमई इन इंडिया। ये सारी चीज़ डिस्कस करेंगे, एंड तक बने रहिएगा। अगर आप नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव सभी के साथ। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हम सुबह डेली बेसिस पे 5 बजे ये वीडियो अपलोड करते हैं जो आपकी लर्निंग में काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। कंटेंट बड़े ही रिफाइंड वे में, टू द पॉइंट कंटेंट हम आपके लिए लेके आते हैं। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana.
We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स नेशनल अफेयर से। इंडिया एंड रशिया ने एक पैक्ट साइन किया है ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल टाइज को दोनों कंट्रीज के बीच में। देखो, दोनों कंट्रीज स्पेशली इंडिया, हम मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना चाहते हैं, हम इंपोर्ट्स कम करना चाहते हैं ताकि दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंस कम हो सके। वहीं पे हम एक्सपोर्ट्स बनाना चाहते हैं ताकि हम इंडिया में जो प्रोडक्ट्स बनाएं हम उनको एक्सपोर्ट भी कर सकें। तो उसके लिए इंडस्ट्रीज होना बहुत ज़रूरी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए इंडिया और रशिया के बीच में ये पैक्ट साइन होता हुआ दिखा। कहाँ पर? ड्यूरिंग द 11th सेशन ऑन इंडिया रशिया वर्किंग ग्रुप ऑन द मॉडर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल कॉपरेशन। राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। फिर इसी के अलावा अगर आप अभी न्यूज़ फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स तो देख रहे होंगे कि इंडिया पर यूएसए ने पहले 25% टैरिफ लगाया था और फिर बढ़ा के 25% और लगा दिया। रीज़न वो क्या दे रहे हैं कि इंडिया रशिया से हम इंपोर्ट करते हैं या फिर ट्रेड करते हैं ऑयल को, एंड वो इनको पसंद नहीं आ रहा। राइट, बट इट कैन बी मैनी अदर रीजन। जियोपॉलिटिक्स एक अलग ही सिचुएशन होती है बिल्कुल, बट जो रीज़न दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है। बट वहीं पे हम दूसरी तरफ देख रहे हैं अभी इंडिया और रशिया के बीच में जो ट्रेड है, जो कॉपरेशन है, वो और स्ट्रेंथन होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। फिर FIEO इन्होंने रिलीज किया ओवरव्यू ऑफ स्टेट्स एक्सपोर्ट 2024-25। ये बेसिकली क्या है, हमारी स्टेट्स, कौन स्टेट कितना एक्सपोर्ट कर रही है। अगर हम यहाँ पे डाटा देखें तो गुजरात ने यहाँ पे टॉप किया, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया, 9.38 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट देखने को मिला इन FY25। FIEO के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया, जो कि है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। गुजरात में भी किसने टॉप किया? गुजरात में भी जामनगर में सबसे ज़्यादा, जामनगर से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट देखने को मिला, 36.91% का टोटल एक्सपोर्ट देखने को मिला सिर्फ जामनगर से। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले पे गुजरात, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड तमिलनाडु एंड फोर्थ पर कर्नाटका एंड उसके रिस्पेक्टिव एक्सपोर्ट्स। फिर आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इनके द्वारा भी रिवाइज किए गए हैं बेस ईयर की, जो इससे हम GDP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड CPI को नापते हैं। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो जो नया बेस ईयर है फॉर GDP एंड IIP वो 22-23 है, एंड बेस ईयर फॉर CPI जो कि इन्फ्लेशन बताता है, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, वो 2025 यहाँ पे रखा गया है। रीज़न क्या दिया गया है, क्यों हमने ये चेंज किया है? रीज़न होता है ताकि जो हमारी इकोनॉमी है बेटर स्ट्रक्चरल चेंजेस हो सके एंड प्रॉपर डाटा हमें मिल सके। नेक्स्ट बैंकिंग एंड फाइनेंस पे आते हैं। RBI की थर्ड बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज की गई 25-26 के लिए। यहाँ पे जो रेट्स हैं उनको अनचेंज रखा गया, जैसे फॉर एग्जांपल रेपो रेट 5.5% रखा गया। पे बोला जा रहा था, मार्केट में एक न्यूज़ आई थी काफ़ी मतलब उसने जोर पकड़ा था कि रेपो रेट कम होने वाला है अगस्त में, एंड जो बैंक लोन है वो और कम होते हुआ हमें देखेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सेम रखा गया। रिवर्स रेपो रेट 3.35, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 5.25, MSF 5.75, कैश रिजर्व रेशो 3%, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो 18% एंड बैंक रेट आपका 5.75% रखा गया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एक और चीज़ याद रखेंगे, जो इन्फ्लेशन 3.1 बोली गई है FY26 के लिए, एंड FY26 के लिए GDP 6.5% बोली गई। एक और चीज़ हमने कल देखा था कि ट्रेजरी बिल्स में SIP यहाँ पे अलाउ कर दी गई है रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स। अभी रिसेंटली RBI के द्वारा इशू किए गए हैं को लैंडिंग नॉर्म्स को, ताकि जो रिस्क शेयरिंग है एंड ट्रांसपेरेंसी है उसको यहाँ पे बढ़ावा दिया जा सके। आई रिपीट, RBI के द्वारा जो को लैंडिंग नॉर्म्स है उनको बढ़ावा दिया गया है। यहाँ पे अगर हम देखें, RBI ने इशू किए को लैंडिंग गाइडलाइंस को फॉर बैंक्स एंड NBFCs, जहाँ पर हम देखेंगे कि सभी रेगुलेटेड एंटिटीज़ को यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया, जो कि को लैंडिंग एग्रीमेंट्स में इंडल्ज है, कि वो मिनिमम 10% ऑफ ईच इंडिविजुअल लोन ऑन देयर ओन बुक्स, राइट, कि वो रिटेन करेंगी एटलीस्ट 10% ऑफ ईच इंडिविजुअल ओन ऑन देयर ओन बुक। मतलब अगर वो किसी को लोन दे रहे हैं उसमें से 10% उनकी बुक्स पे वो रजिस्टर्ड होगा। एंड ये जो रिवाइज गाइडलाइंस है 1 जनवरी
2026 से लागू होंगी। एंड ये जो नए रूल्स हैं ये मैंडेट करेंगे दैट द लोन ओरिजिनेटर वो ट्रांसफर कर दे लोन टू द को लेंडर 15 दिन के अंदर, राइट। एंड जो डिफॉल्ट लॉस गारंटी रहेगी उसको 5% तक यहाँ पे रखा गया। मैक्सिमम डिफॉल्ट लॉस गारंटी 5% की रहेगी ऑफ द आउटस्टैंडिंग लोन पोर्टफोलियो। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इन्होंने लॉन्च किया रेमिट फर्स्ट टू इंडिया को एनआरआईज के लिए, ताकि वो अपना पैसा इंडिया को भेज सके। उस इनवर्ट रेमिटेंस हो गया कि बाहर से इंडिया में पैसा आ रहा है, तो जो एनआरआईज बाहर काम कर रहे हैं वो इंडिया पैसा इजीली सीमलेस भेज सकें, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एक्सपीरियंस बेटर हो सके, सिक्योर हो सके। इसीलिए यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने रेमिट फर्स्ट टू इंडिया ये एक मॉडर्न डिजिटल रेमिटेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया सिंग एक्स के साथ। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमी एंड बिजनेस। स्टूडेंट्स अभी अमेजॉन इंडिया एंड FIEO इनके द्वारा एक MOU साइन किया गया ताकि ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा सके इन द MSME सेक्टर। देखो स्टूडेंट्स हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़, लेकिन फिर समझो इंडिया MSME सेक्टर के ऊपर बहुत काम करती है, क्योंकि ये सेक्टर है कि जो कि बहुत सारी जॉब्स क्रिएट करके देता है इंडियन इकोनॉमी में, लोगों को रोजगार देता है। एंड ये कई सारे प्रोडक्ट्स एज वेल एज सर्विसेज बनाता है जो कि एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, जिससे डॉलर हमारे पास आते हैं। इसीलिए इसको बूस्ट देने के लिए, इन एक्सपोर्ट्स को बूस्ट देने के लिए MSME की अमेजॉन इंडिया एंड FIEO के द्वारा यहाँ पे MOU साइन किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं गोल्डमैन सैक्स, इन्होंने इंडिया की GDP रिवाइज कर दी 25-26 के लिए, राइट, क्योंकि US टैरिफ इम्पैक्ट जो भी देखने को मिल रहा है, राइट। इनकी कितनी प्रोजेक्ट कर रहे हैं अब, इंडिया की GDP कितनी होने वाली है गोल्डमैन सैक्स के हिसाब से, पहले 6.5 प्रोजेक्ट कर रहे थे, अब इन्होंने 6.4 प्रोजेक्ट कर दिया। अभी भी इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगी। बहुत नॉमिनल सा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है US टैरिफ का। पहले 25% लगाया गया था, अब US के द्वारा बोला गया, US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बोला गया कि 25% और टैरिफ यहाँ पर हम आपके लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पर। फॉर्चून 100 मोस्ट पावरफुल पीपल इन बिजनेस लिस्ट ये रिलीज की गई जेनसेन हुआंग के द्वारा, इन्होंने यहाँ पे टॉप किया, राइट। जेनसेन हुआंग एनवीडिया के CEO हैं एंड एनवीडिया वो पहली कंपनी बन गई थी जिन्होंने 4 ट्रिलियन मार्केट कैप को अचीव किया। अब माइक्रोसॉफ्ट ने भी कर लिया, बट ये पहली कंपनी थी। ये सर्वर्स की जो चिप्स होती हैं वो बनाती है, राइट। एंड इनके द्वारा यहाँ पे 100 मोस्ट पावरफुल पीपल की लिस्ट में जेनसेन हुआंग ने टॉप किया। मुकेश अंबानी इंडिया के जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये 56 पोजीशन पर यहाँ पर आते हैं। तो अगर हम इस लिस्ट की बात करें, ये सेकंड एडिशन है, फॉर्चून के द्वारा रिलीज की गई। जेनसेन हुआंग जो CEO एंड प्रेसिडेंट है एनवीडिया के, ये फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल पीपल इन बिजनेस लिस्ट। नेक्स्ट इंडियन आर्मी, इन्होंने इंडक्ट किया भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के सेमी ऑटोमेटिक माइनफील्ड मार्कर MME Mark 2 को, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस, इसको मार्क करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें, ये है MME Mark 2 इंटू इंडियन आर्मी लाया गया, जॉइंटली डेवलप्ड बाय लैब ऑफ DRDO एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। एंड मिनिमम 1.2 किलोमीटर पर आवर की इसकी ऑपरेशनल स्पीड रहेगी। टू सेमी ऑटोमेटिकली मार्क एंड फेंस द माइनफील्ड्स इसका काम रहेगा। चलिए फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स एनवायरनमेंट के ऊपर। डिस्कवरी ऑफ अ नैरो बैंडेड रेन स्नेक, ये भी डिस्कवर किया गया मिजोरम में। एंड स्मिथोफिस लेफ्टोफेसियस्ट, ये इसका साइंटिफिक नेम रहेगा इस नए रेन स्नेक का, जो कि मिजोरम में डिस्कवर किया गया। फिर आ जाते हैं MS स्वामीनाथन, ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इनको नाम बोला जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन था आपका जो व्हीट जो रेवोल्यूशन आया था, राइट, एंड अनाज रेवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं। तो स्वामीनाथन ने बहुत एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर थे ये, एंड इन्हीं को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, राइट। इनकी बायोग्राफी आई थी द मैन हु फेड इंडिया, ये भी 7 अगस्त को रिलीज की गई इनके 100 बर्थ एनिवर्सरी पर। एंड इनको कमेमोरेट करते हुए कि इंडिया में इनका जो योगदान रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन में, उसको सराहते हुए ये बुक यहाँ पे रिलीज की गई। ये किसके द्वारा? हार्पर कॉलिन्स इंडिया के द्वारा इसको रिलीज किया जाएगा। एंड प्रियम्बड़ा जय कुमार इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। नेक्स्ट नेशनल हैंडलूम डे हम 7 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। क्यों ऑब्जर्व करते हैं? हैंडलूम के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए एंड हैंडलूम इंडस्ट्री को फोकस में लाते हुए जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है हैंडलूम सेक्टर का इंडिया की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए 11वां एडिशन 7 अगस्त को। एंड इसकी थीम जरूर याद रखेंगे, माय हैंडलूम माय प्राइड, माय प्रोडक्ट माय प्राइड। नेक्स्ट आते हैं फिर स्टेट न्यूज़ के ऊपर स्टूडेंट्स। केरला ने लॉन्च किया हीट रेजिलियंट मुदाबडी, राइट, मुदाडी, आई रिपीट हीट रेजिलियंट मुदाडी। ये एक प्रोजेक्ट है जो कि एक्सट्रीम हीट को टैकल करेगा एंड मिटिगेट करेगा राइजिंग टेम्परेचर को ड्यू टू
एक्सट्रीम हीट वेव्स। एंड ये केरला का पहला कॉम्प्रिहेंसिव हीट एक्शन प्लान रहेगा जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा लॉन्च किया गया। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रांग होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं एवरी ईयर वर्ल्ड बाइसिकल डे। ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड बाइसिकल डे हम ऑब्जर्व करते हैं 3 जून को हर साल, ताकि बाइसिकल जो एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है एंड हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराई जा सके। पहली बार 2018 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। फिर आते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन। ये ऑब्जर्व किया जाता है कब? ये हम ऑब्जर्व करते हैं 4 जून को हर साल, राइट। एंड 43rd ऑब्जर्वेंस हमने इसका देखा, मतलब 43rd एडिशन रहेगा इस डे का जो हम अभी ऑब्जर्व करेंगे। फिर इसके बाद आ जाते हैं विच ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व्स द इंटरनेशनल डे ऑफ फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग एनुअली ऑन द ग्लोब ऑन 5 जून। ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इस डे को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट एंड एक और चीज, इसका 8th एडिशन हमने ऑब्जर्व किया अभी 2025 में, ठीक है। 5 जून 2025 को ये ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट रशियन लैंग्वेज डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 6 जून को ऑब्जर्व की जाती है। रशियन लैंग्वेज जो कि एक ऑफिशियल लैंग्वेज है यूएन की, उसको प्रमोट करने के लिए, उसके रिच हेरिटेज कल्चर को प्रमोट करने के लिए। एंड इस बार 2026 में हमने बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी फादर ऑफ मॉडर्न रशियन लिटरेचर की। कौन है वो? उनका नाम पूछा गया है, तो वो है अलेक्जेंडर सर्गेविच पुष्किन, ठीक है, मार्क करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हर साल वर्ल्ड पेस्ट डे कब ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब? तो 6 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड पेस्ट डे टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द रोल ऑफ प्रोफेशनल पेस्ट मैनेजमेंट इन प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ, फूड सेफ्टी, प्रॉपर्टी एंड द एनवायरनमेंट। तो 6 जून को ये ऑब्जर्व किया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं हर साल वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार इसका 7वां एडिशन हमने ऑब्जर्व किया। यूनाइटेड नेशन आर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर इसको ऑब्जर्व किया जाता है। थीम रहेगी फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। नेक्स्ट हर साल वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? तो वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे ऑब्जर्व किया जाता है 8 जून को अक्रॉस द ग्लोब। थीम रहेगी ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस एंड ग्रे रिबन यहाँ पे इसका सिंबल रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे 9 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। पूछा जा रहा है अलॉन्ग विद द इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम WAD वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे ये लॉन्च किया गया था किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? 2007 में। तो इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन के द्वारा मिलकर इसको लॉन्च किया गया 2007 में। 2008 में पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया, फर्स्ट एडिशन। नेक्स्ट इंटरनेशनल आर्काइव्स डे 9 जून को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि रिकॉर्ड्स एंड आर्काइव्स की सेफ गार्डिंग की जा सके। ये डे कमेमोरेट करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स 9 जून को। कहाँ पर? 1948 में पेरिस, फ्रांस में। फिर इंटरनेशनल आर्काइव्स वीक भी याद रखेंगे, 9 से लेके 13 जून तक ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल आर्काइव्स वीक। नेक्स्ट आ जाते हैं हर साल इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली टू हाईलाइट द रिस्क एसोसिएटेड विद द लेवल क्रॉसिंग्स, द पॉइंट वेयर रोड एंड रेलवे ट्रैक्स इंटरसेक्ट एट द सेम लेवल एंड टू एनकरेज द सेफर बिहेवियर। तो हर साल इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये ऑब्जर्व किया जाता है 5 जून को, और इसका 17वां एडिशन हमने इस बार ऑब्जर्व किया। फिर आ जाते हैं हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले। ये ऑब्जर्व किया जाता है कब? इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले 11 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं। एंड सेकेंड एडिशन इसका हमने इस साल ऑब्जर्व किया विद द थीम चूज प्ले एवरी डे। नेक्स्ट हर साल वेनिस इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ग्लोबली टू रेज अवेयरनेस अबाउट एल्बिनिज्म, जो कि एक रेयर एंड नॉन कंटेजियस इनहेरिटेड जेनेटिक कंडीशन होती है। तो ये कब ऑब्जर्व करते हैं ये डे? इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। तो 13 जून को हम ये ऑब्जर्व करते हैं। आज 11वां एडिशन हमने इसका ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये ऑब्जर्व किया जाता है 14 जून को वर्ल्ड वाइड टू रिकॉग्नाइज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉलंटरी अनपेड ब्लड डोनर्स एंड रेज अवेयरनेस अबाउट द क्रिटिकल नीड्स फॉर सेफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। ये डे पहली बार ऑब्जर्व किया गया 2004 में, दैट मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ होम। तो ये
किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? कार्ल लेंचस्टीन की बर्थ एनिवर्सरी होती है। इसकी थीम रहेगी गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइव्स। नेक्स्ट, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, ये ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली अक्रॉस ग्लोब ऑन 15 जून टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द अब्यूज, नेग्लेक्ट एंड मिस ट्रीटमेंट जो कि फेस की जाती है ओल्डर पर्सनस के द्वारा। क्वेश्चन है, इन कोलैबोरेशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर अब्यूज, ये इनिशिएट किया गया द ग्लो ऑब्जर्वेंस ऑफ दिस डे इन 2006। किस ऑर्गेनाइजेशन से? तो वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल एशियन डेंगू डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? एशियन डेंगू डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 15 जून को। ग्लोबल विंड डे कब ऑब्जर्व करते हैं? ग्लोबल विंड डे ऑब्जर्व किया जाता है 15 जून को। इसकी थीम याद रखेंगे डे ऑफ कम्युनिटी एक्शन। फिर वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ये ऑब्जर्व किया जाता है 17 जून को, राइट। आइडेंटिफाई द ईयर व्हेन UNCCD वाज ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड, किस साल में ये एस्टैब्लिश हुई थी ऑफिशियली? तो बताओ कब ऑब्जर्व हुई थी? 1994 में। नेक्स्ट, ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे फॉर कमेमोरेटिंग हेट स्पीच ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये डे ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच, 18 जून को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड ऑटिस्टिक्स प्राइड डे ऑब्जर्व किया जाता है 18 जून को। पूछा जा रहा है थीम क्या रहेगी इस वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड डे की? तो थीम रहेगी अनअपोलोजेटिकली ऑटिस्टिक, ये थीम रहेगी। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, हर साल इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कन्फ्लिक्ट ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब, राइट। पूछा जा रहा है कब ऑब्जर्व किया जाता है ये? तो ये हम ऑब्जर्व करते हैं 19 जून को। 11वां एडिशन हमने इस बार ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, नेशनल रीडिंग डे इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन 19 जून एवरी ईयर with the aim to instill reading culture among all age groups and encourage literary through books and libraries। तो ये जो डे है ये ऑब्जर्व करता है टू कमेमोरेट द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ विच पर्सनैलिटी वाइडली नोन एज द फादर ऑफ द लाइब्रेरी एंड लिटरेरी मूवमेंट इन केरला। तो नेशनल रीडिंग डे ऑब्जर्व करते हैं 19 जून को। फादर ऑफ लाइब्रेरी एंड लिटरेरी मूवमेंट इन केरला कौन है जिनको ऑनर करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है? वो है PN पेनेकर, ठीक है। एंड 30वां एडिशन हमने इस बार इस डे का ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट आ जाते हैं, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे ऑब्जर्व किया जाता है 21 जून को टू रिकॉग्नाइज द क्रूशियल रोल ऑफ हाइड्रोग्राफी इन मैरीटाइम नेविगेशन। तो ये डे 21 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, राइट, टू कमेमोरेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। किस साल में? तो किस साल में ये बनाई गई थी? तो ये एस्टेब्लिश की गई थी 1921 में। फिर आ जाते हैं, हर साल वर्ल्ड म्यूजिक डे ऑब्जर्व किया जाता है टू प्रमोट यूनिटी, क्रिएटिविटी एंड इमोशनल कनेक्शन थ्रू म्यूजिकल परफॉर्मेंस। तो कब किस साल हमने व्हेन एवरी ईयर के किस दिन हम वर्ल्ड म्यूजिक डे ऑब्जर्व करते हैं? तो हर साल 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे ऑब्जर्व करते हैं। 43rd एडिशन था इस बार वर्ल्ड म्यूजिक डे का। देन इंटरनेशनल विडोज डे ऑब्जर्व किया जाता है कब? तो इंटरनेशनल विडोज डे हम 23 जून को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन इन डिप्लोमेसी कब ऑब्जर्व किया जाता है? सो इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन इन डिप्लोमेसी 24 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। इसका 3rd एडिशन इस बार हमने ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, वर्ल्ड विटिलिगो डे, ये कब ऑब्जर्व करते हैं? 25 जून को ऑब्जर्व करते हैं। ये विटिलिगो डे या फिर विटिलिगो पर्पल फंड डे या एंड पर्पल कलर यहाँ पे ऑफिशियल सिंबल रहता है फॉर रिप्रेजेंटिंग विटिलिगो। एंड इनोवेशन फॉर एवरी स्किन पावर्ड बाय AI, ये थीम रहेगी वर्ल्ड विटिलिगो डे की। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने डिक्लेयर किया 24 जून को एज अ पासपोर्ट सेवा दिवस 2013 में, पासपोर्ट सेवा दिवस। देन वर्ल्ड रेफ्रिजरेशन डे, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड रेफ्रिजरेशन डे हम ऑब्जर्व करते हैं 26 जून को, 26 जून को। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे, क्वेश्चन अगर पूछा जाए संविधान हत्या दिवस, संविधान हत्या दिवस या फिर कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 25 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। एंड ये सेकंड ऑब्जर्वेंस है इस डे का। रीज़न बीइंग कि 1975 में 25 जून को देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के द्वारा यहाँ पर इमरजेंसी लगा दी गई थी अंडर आर्टिकल 352।
तो वो बहुत गलत हुआ था। उस टाइम को कमेमोरेट करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। पहली बार इस डे को 2024 में डिक्लेयर किया गया था या ऑब्जर्व किया गया था। Next is our homework question, students. First question, tell me who became the fourth Indian women to earn the Grandmaster title. Then second question, tell me recently in the World University Games, what is the rank of India in the medal tally and how many medals did India win? Then third question, tell me recently, if I ask you, bold Kurukshetra, this is an exercise held between which two countries, held where, location also, right? Fourth question, name that indigenous pollution control vessel launched by Goa Shipyard Limited and given to Indian Coast Guard. What is the name of it? And the fifth question, students, what is this Tracers mission? Tracers mission. Who launched this mission? I want the full form of this tracer also, right? And what this tracer mission will be doing. So these are your homework questions, students. I need to maximum participation from all the students watching this video.